Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Izhar. I'm a computer science student and you are watching Node University. The series of learning Python, this is our 79th lecture and here we will be discussing about Python file handling part 2, right? Part 1 में हमने पढ़ा था कि फाइल हैंडलिंग हमारे पास क्या होती है, हम इसको किस तरह प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं और किस किस्म की इनके किस किस्म की किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ मेथड्स क्या होती है, राइट? जिस तरह मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, रीड, राइट, अपेंड, राइट, एट। ओके, तो लेट्स सी अब कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, राइट? ओपन अ फाइल ऑन अ सर्वर, राइट? अगर इन केस आप कुछ फाइल ओपन करना चाहते हैं किसी भी सर्वर से या अपने कंप्यूटर पे कोई भी चीज़, राइट? तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? Assume we have the following file located in the same folder as Python, right? तो यहाँ पर है कि हम assume करते हैं लेट्स से कि I'm assuming that I have some file with the name of demo file.txt, right? And there is some text written inside it. Hello, welcome to demo file.txt, and this file is for testing purposes. Good luck. There is three sentences inside the file demo file.txt, right? The first sentence is this one, the second is this one, and third is this one, right? और ये उसी फाइल में है, यानी कि पाइथन फ़ोल्डर में है जिसमें मैंने पाइथन ओपन किया हुआ है, राइट? To open the file, use the built-in open function, right? When you're gonna open the file, then you have to use the open function, right? Or here. Okay, the open function return a file object which has a read method for reading the content of the file, right? तो जो ओपन फंक्शन है ये क्या करता है कि फाइल ऑब्जेक्ट को यानी कि रिटर्न करता है और उसमें ना रीड मेथड आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम द फाइल, राइट? ओके, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं f इज इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। दिस इज अ पाथ वेयर वी हैव स्टोर द डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी और राइट। और यहाँ पर हमने मोड दिया हुआ है कि हम किस मोड में इसको ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड में उसको ओपन करना चाहते हैं। print f dot read यानी कि यहाँ पर हम इसको रीड करना चाहते हैं। if the file is located in a different location you will have to specify the file path like this, right? अगर इन केस आपके पास जो यानी कि फ़ोल्डर है वो किसी दूसरी फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है, जो फ़ाइल है आपके पास जो आप रीड करना चाहते हैं तो आप उसी यानी कि उसी का पाथ देंगे, राइट? लेट्स से कि डी फ़ोल्डर में आपका जो है हमारे पास फ़ोल्डर है उसमें कुछ इस तरह फ़ाइल पड़ा हुआ है, यानी कि माई फाइल्स के अंदर फिर वेलकम डॉट टीएक्सटी के नाम से है, तो आप कुछ इस तरह फ़ाइल लोकेशन देंगे, राइट? ओके, फ़ाइल पाथ देंगे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट द रीड मेथड रिटर्न द whole text, but you can also specify how many character you want to return, right? In case you want to you read the first line or some character from the file, then you can specify it, right? लेकिन जो जनरली हमारे पास बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है वो कंप्लीट फाइल आपको रिटर्न कर देता है रीड मेथड, राइट? Okay, read the first five characters of the line file, right? तो अगर in case आप five character पढ़ना चाहते हैं, if you want to read the five character of file, then you can mention it over here, right? As a parameter, right? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं as an argument, तो आप five पास कर देंगे तो आप five character ही read कर सकेंगे, okay? You can return one line by using the read line method, right? In case you wanna read the first line, second line, or third line of the file that you have, then you can specify it, right? Read one line of the file. तो f is equal to open demo file.txt और right यानी कि ये मोड हमने दिया हुआ है एंड यहाँ पर print f dot read line, right? तो ये पर फर्स्ट लाइन जो है वो रिटर्न कर देगा। by calling read line two times you can read the two first line, right? in case आप दूसरा लाइन भी पढ़ना चाहते हैं then you can specify it over here, right? ये कोड करके आप उसे देख सकते हैं। okay, by looping through the lines of the file you can read the whole file line by line। in case आप line by line whole file को पढ़ना चाहते हैं तो आप for loop, while loop और do while loop whatever you like, then you can use the for loop यानी कि loop आप use कर सकते हैं। okay, for reading the line by line of the reading line by line the file, right? Looping through the file line by line, right? So f is equal to open demo.txt demo file.txt, or right for x in f तो print x, right? तो यहाँ पर ये read line by line read कर लेगा इसको। okay, close file। अगर इनकेस आप यानी कि फाइल हैंडलिंग और नहीं करना चाहते या उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, उसको बंद करना चाहते हैं, जो कुछ स्टार्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको बंद भी करते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू आर डन विद इट, राइट? इन केस आप और काम उस पे नहीं करना चाहते हैं या यू आर डन, देन यू कैन क्लोज इट, राइट? एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज इट।
Close the file when you are finished with it, right? F is equal to open demo.txt, demo file.txt, all right, and print F is equal to read line. तो यहाँ पर हम एक read line कर लेंगे and just close it, f dot close it, ये मेथड है हमारे पास, तो इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी ट्यूटोरियल। आई होप गाइस कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।